So we are coming directly to the text. है My aunt will be down presently, Mr. Newton said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. We can write two meanings here. गोटे मीनिंग किसी लेख ये पुट अप विथ मी लेख पुट अप PUT put up. It is a phrasal verb and the meaning of put up is accept somebody unpleasantly. Accept somebody unpleasantly, which can be written in Odia. तार अर्थ हो कौन लेखि सार फास्ट मु कहबी एक्सेप्ट समबडी अनप्लेजेंट इच्छा नथिले भी जन को ग्रहण करने को पड़ो और जनकर कथा को शुणा को पड़ो दैट काइंड ऑफ समथिंग दैट इज पुट अप यू पुट अप योर माइंड टू लिसन हिम है बा जहाँ कि लिखि परिबा सो यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी एक्सेप्ट समबडी अनप्लेजेंटली दुखर सहित जन को एक्सेप्ट करवा बुझीगला सो माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मोर आंटी कौटी अच्छा डाउन तले थे Mr. Newton, who said it? The young girl. In the meantime, you must try and put up with me. Now, in the meantime, you will have to listen me carefully what I am telling you. Bujela, that young girl said to the person, Mr. Newton, Frampton Notle, the full name of that person. You can write another meaning here, ENDEA. VORED. The meaning of endeavored is prayaso kole, the past tense of endeavor. Hala? The past tense of endeavor. So Frampton Notle endeavored to say the correct something which should duly flatter. Bujhela? Correct something which should duly flatter the nice of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. So most of the people in the second line or in the second paragraph it is mentioned number of people used to come to that place for their better treatment. And the first treatment to be gotten from that place was कौन फ्लैटर जोटा कि कह जाउछि जन को फ्लैटर करवा बा किछि कथा कहि कर जन को आमे ये करवा बुझिला फ्लैटर कहले खोसा मद बुझिला एठी हां ड्यूली फ्लैटर द नाइस ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द aunt that was to come बुझिला बिफोर कमिंग हर aunt she was doing something हला she was going to give a treatment दउतला से younger. Privately, he doubted more than the person के Mr. Newton. He doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers, a succession of, lekha the meaning of a succession of, ASUCCESSION. A succession of total strangers. Succession बोल कहले a succession of कहले a series of माने बुझे होची तो गोटे ग्रुप हाँ गोटे सीरीज गोटे जिनस माने नंबर ऑफ SERIES माने नंबर ऑफ पेशेंट्स यूज्ड टू कम टू दैट प्लेस टू गेट ट्रीटमेंट पाया पय से माने आसुथिले दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम स्पाइनल डिजीज जो स्पाइनल डिजीज शिकार होचन तांको मानकर भलो करबा पय तांको सिटी किछ ट्रीटमेंट दिया जाए. सो द पर्सन मिस्टर न्यूटेल वाज वाचिंग दैट एट द हाउस प्राइवेटली से प्रथम डाउट कले कौन पाई से माने आसुचंती बोध हुए ये हितवे ऑन ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्यूर एंड दे माइट हैव कम और दे वुड हैव कम टू दैट प्लेस टू गेट ट्रीटमेंट एंड help it helps them the nerve cure which he was supposed to be undergoing. तांको जो ट्रीटमेंट दिया हबो से भलिया किछि पेशेंट्स टू गेट द ट्रीटमेंट दे हैव कम ओवर हियर बुझेला सोन सेति पई आसिचंती. आई नो हाउ इट विल बी एटा किबोली हेबो मो भलो जानछि. हिज सिस्टर हैड सेड when he was preparing to migrate to his rural treat. I know it will be, his sister had said. So Mr. Newton
came to that place to get treatment. I told you, but how did he come? से किभଳି आसिले? That his sister had said, तांकर भौणी तांको कहिथिला, had said he was preparing to migrate to this rural retreat. से जगह को जाउछंती to get a better treatment there. बुझेला? Retreat, RETREAT. No. Rural retreat. Rural retreat, the word lekho, rural retreat. The meaning of rural retreat is where priest and church stand. हाँ, जोटी priest और ये रहता है, church रहता है. Church spelling sir? CHURCH. SF place बोल के हमें कोई परिवार SF place of SF place of rural retreat रो अर्थ होची SF place of countryside लेखो SF place of countryside माने सहर रू बाहर थिबा गोटे जगह बुझिला which is a safe place. So here the person was sent by the sister. Mr. Newtel has been sent by his sister. तांकर भौणी द्वारा से तांको सेठी पठा जायछि to get treatment. You will bury yourself down there. तुमको सेठी भलो भाबरे हजेई देबो से कहउचंती. You will have to stay for a long time. Bury माने पुती देवा समाधि देवा बुझिला. That means you will have to fix or cement your place there. तुमर जगह को सेठी सुरक्षित रखिबा को पड़ियो for a long time किछि दिन पई किछि समय पई. There are not to speak to a living soul. कहा से तो कथावार्ता करिवो नै and you will never attend anyone. का को भी देखाबो नै and your nerves will be worse than ever from moping. MOPING. Worse than ever from moping. लेखो worse than ever from moping. Ever. Yes. खरापरू अति खराप होबाको जिबा इफ यू अटेंड और इफ यू टच समवन जदि तुम क्या कथा हो खरापरू अति खराप अवस्था को गति करिवो तमरो स्वास्थ्यर अवस्था ए कथा कुआइछि. हाँ, सो इट वाज एन अटेम्प्ट ऑफ हिज सिस्टर टू गिव और टू प्रोवाइड हिम अ बेटर ट्रीटमेंट बुझिला टू प्रिवेंट दैट स्पाइनल डिजीज. से रोगर निराकरण पई चेष्टा करचंती तांकर भौणी एंड सी गेव हिम सम ऑफ द लेटर्स है किसी लेटर देइचंती जहाँद्वारा से गाँव को जाकर ट्रीटमेंट पाई. आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. मु जाकु सेठी जानछि विषय मु लेटर लिखि इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू तुमको दिया जीवो. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर जहाँको मु भल भाव जानी वेर क्वाइट नाइस जो मैंने बहुत भल लोक. सो फ्रम्पटन वंडर्ड वेदर मिसेस सैप्लटन the lady of whom he was presenting one of the letters of introduction came into the nice division. So Frampton कौन कले देखिवा को लागिले लेटर मिसेस सैप्लटन the lady to whom he was presenting one of the letters. So से खोजिवा को लागिले जे मिस्टर फ्रैम्पटन खोजिवा को लागिले जे where is that letter which will be given to Mrs. Saplerton. Mrs. Saplerton को दिया जाउथवा लेटर सिटी कोठी अछि that is what he was searching. बुझेला. So do you know many of the people round here? Asked the nice माने से झियारी बुझेला. asked to that person Mr. Newtel को पचारछि कोन do you know many of the people round here थिबा एठी लोकन को तमे कोन जानिछो. when she judged that they had sufficient silent communion बुझेला. तो से विषय एते जानि नथला बरकर द रेस्पॉन्स आसिला बुझेला. when she judged that they had sufficient silent communion बुझिला अल्प कथावार्ता माध्यम रे. हैं हार्डली अ सोल सेड फ्रम्पटन गोटे लोक का भल भाव जानी बोलिक कहले माय सिस्टर वाज स्टेइंग हियर एट द रेक्टोरी है मोर रेक्टोरी हूँ एक्चुअली द प्लेस ऑफ प्रिस्ट एंड चर्च है लिखि दियो. रेक्टोरी हूँ ए हाउस where church and priest live. गोटे घरे जोठी चर्च रही थाए आउ प्रिस्ट भी रही थांती. हाँ
है. So he said A house where a house where church and priest live. बुझिला. So at first the person के that 15 years old young girl asked to Mr. Newton, do you know anyone here? काहाकु जानिଛ तमे एठी? Then he said hardly a soul. गोटे लोक भल भाव जानी किए हूँ सी माय सिस्टर हु वाज स्टेइंग हियर. ये रोला सी एट द रेक्टोरी गोटे घरे जो चर्च ऑफ प्रिस्ट रोते. यू नो सम 4 years एगो 4 वर्ष पूर्वे. एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर. एंड शी वाज द पर्सन हु गेव मी ऑल द लेटर्स. हाँ, सम ऑफ देम टू हुम शी न्यू. जहाँ को से जानी पाई से किसी लेटर देता. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टेंट रिग्रेट. पश्चाताप सहित दुखर सहित गोटे लास्ट स्टेटमेंट देला किए मिस्टर न्यूटन. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट. देन फाइनली दैट यंग गर्ल केम टू नो दैट द पर्सन मिस्टर न्यूटन हु हैड नॉट नोन मच अबाउट हर आंट. तार आंटी विषय बा खुड़ी विषय से बेसी किसी जानी नहीं. Pursued the self-possessed young lady only her name and address, and what more he knew about her aunt. तार aunt विषय बा खुड़ी विषय से झीर खुड़ी विषय से कौन जानी थिला? The name and the address, nothing much. आउ नहीं किसी. And admitted the caller, say unknown लोकोटी बस Mr. Nuttall सेतिकी ही कहले. He was wondering whether Mrs. Appleton was in the married of widowed state. ए जगह रे विधवा माने से कौन कहूँ. He was wondering whether Mrs. Appleton was in the married of widowed state. से कौन एटी मैरिड होकर अच्छा कि एज ए हाँ विधवा अच्छा से विषय से जानापी चाहूँगी और खोजा लगुंट. एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम seemed to suggest masculine habitation, and the room which was full of suspense, thriller. बुझीगला. It was full of amazing tricks. That house घर किसी गोटे amazing tricks भली लगुला. बुझीगला. The person Mr. Nuttall didn't know much about the aunt. बुझीगला. And it seemed गोटे यह जना जाउतला रूम टी से कौन to suggest masculine habitation. We can write the meaning of masculine habitation. MASCULINE. Masculine habitation is dwelling of men. Dwelling, DWELLING, dwelling of men. मनीष दुई प्रकार भली. बुझीगला. दुई प्रकार मनीष पेटर गोटे कथा थी बाहर गोटे कथा थी. डुएल माइंडेड जेटा कहूँ आम है. सो काइंड ऑफ पर्सन से रूम टी से भाया लगुला अच्छी गोटे देखा जाऊँ गोटे भितर किंतु आ गोटे स्टोरी समथिंग लाइक दैट. Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child. That would be since your sister's time. बुझीगला. So that young girl was trying to explain something before that stranger named Mr. Nuttall. बुझीगला. तार सामने से किसी कहवाको जाऊला कौन द एनवायरमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय द यंग लेडी. बुझीगला. सी वाज गोइंग टू स्पीक समथिंग टू दैट पर्सन. किसी जिनस कहवाको जाऊला हतचकित करदेला भाई जिनस. बुझीगला. And she tried to feel him that her aunt was a widow. तार aunt गोटे widow बोलिकर जनापे चाहूला. बुझीगला. Through her trick, through her prank and through her trick. Actually we will come to know about the story till the end when you come to हाला जिते बड़े एंड को आसवा we will come to know whether she was telling the truth and false. बुझीगला. मिछ कहूला कि सत कहूला. we will come to know whether she was lying. So her great tragedy happened just 3 years ago, she said to the person Mr. Nuttall. कहला 3 वर्ष पूर्व गोटे घटना घटी. ट्राजेडी टी गोटे दुखद घटना घटी. said the child. That would be since your sister's time. तमरो भौणी रो पर ठारू. You may wonder why we keep the window wide open in October afternoon, and you should know that why we have opened that window. आमे कहीं खोला रखीचु ये विंडो सेटा. So sorry. Her tragedy, asked Frampton. Somehow in this restful country spot, tragedy seemed out of place. His tragedies
seemed out of place. Her tragedy, the person के Mr. Mr. Nuttall didn't know about the tragedy. बुझेला which the person or that young girl was trying to speak. जोड़ा से कहबा ପାଇଁ चाहुतला. So Mr. Frampton asked somehow in this restful country ई जगह रे tragedy घटुची की बोली रे seemed out of place ए भला दुख दुर्घटना एडी तो घटेवा कथा न बोली करको. You may wonder why we keep that windows wide open on an October afternoon. आमे कोन पई अक्टोबर आफ्टरनून रे खोला रखिछु ए कवर्ड. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आरो पछरे गोटे रीजन अछि सेड द नाइस से झियारी तांकर कहउछि इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू ए लॉन. बुझेला गोटे बड़ो विंडो खोला अछि लॉन पाखरे. बुझेला दैट इज व्हाट शी इंडिकेटेड टू दैट पर्सन नेम्ड मिस्टर Nuttall. बुझेला. So now the interesting story came out. The person was explaining that young lady before the person named Mr. Nuttall. Actually the person was undergoing a treatment Mr. Nuttall, but he didn't know about it. से जान नथला ताकू बर्तन ट्रीटमेंट रो प्रोसेस आरंभ करा अछि. Actually he was a person who was suffering from spinal disease. Okay, so you must it is quite warm of that time of the year, said Frampton, but has the window got anything to do with the tragedy? So window कोन पई खोला रही छि. What is the relation with the tragedy? Tragedy से तार संपर्क कोन बोली कर पचार छि के Mr. Nuttall was asking to the lady that named the person young lady. सर अक्टोबर मास रे गरम होतला कहे छि तुम देखो फर्स्ट कोन कहछि अक्टोबर आफ्टरनून सेड द नाइस इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो. एटा कथा नाही. इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर. से कथा कहछि सेते बेले खरा दिन रो समय थिला. नॉट इन अक्टोबर आई एम टेलिंग यू, सेड फ्रॉम्पटन. बट हैज द विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विथ द ट्रेजेडी. द ट्रेजेडी से तो कोन संपर्क बोली कर जानिया पे से इच्छुक होछि के मिस्टर न्यूटल. आउट थ्रू दैट विंडो 3 इयर्स एगो टू ए डे. गोटे दिन कोन हेछि 3 वर्ष पूर्वे हर हस्बैंड एंड हर 2 यंग ब्रदर्स. तार हस्बैंड माने कार आंटी कर हस्बैंड एंड हर 2 and his 2 brothers went off for their day's shooting. गोटे दिन रो शिकार पई से मन जाइथिले and they never came back. As I told you in the beginning, they never came back. In crossing the moor, MOOR, अजणा जमी बा अजणा जागा, अजणा जमी बा अजणा जागा, अनाबादी जमी बोली कर कहूछु. द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लाइन. So in crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, जेतेबेले तांकर जगह को समान शिकार पाई गले, they were 3 persons along with a dog. ENGULF चारिआडे निमज्जित होकर रहिबा. ENGULF लेखो फर्स्ट. हाँ, एनगल्फ मीनिंग होची जे चारिआडे निमज्जित. एनगल्फ चारिआडे आबुज होकर रहिबा हला. सो let me speak about this line. In crossing the moor, ए जगह दे क्रॉस हेबा बेले what happened in the middle to their favorite snipe. होला स्नाइप शूटिंग. हाँ, स्नाइप शूटिंग जेतबेले बंदूक धरि समान शिकार करबा पई जाइचंती कोन हिची engulf in a tricarious piece of bog. Tricarious price of bog. बुझियला. We can write price of bog. लेखो tricarious bog, not price of bog. It is tricarious bog. bog. लेखो tricarious bog. लेखो the meaning of tricarious bog. लुचि रहिथिबा विपद माडी आसीबा. that is bog. Tricarious bog. TREACHEROUS मु आउथर कहि दोछि TREACHEROUS Tricarious bog. ओदा माने it is the place which is full of लेखो गोटे जगह which is a place लेखो मु कहबी a hidden danger. सेटा गोटे लुचि रहिथिबा विपद तार अर्थ माने lot of meanings are there. कौन लिखी था? कौन लिखी?
कौन लिखियो माने मु कौन कहि तुम तीनटा जिंस कहली परा प्रथम जिंस कौन लिखियो द मीनिंग ऑफ दैट इज ए प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ soft and wet land. A place which is full of soft and wet land. गोटे जगह जहाँ केवल कादुअरे परिपूर्ण बुझीगला which in another language we can say आ गोटे भाषा आम कहवा गले which was full of danger जोटा गोटे विपद परिपूर्ण थिला but those 3 persons didn't know about it. Unfortunately they went to that place हला and then they came under that place बुझीगला and they never came back बुझीगला and it was होची गोटे अनाबादी जमी बोल कर कहा होची it was a land of known कार भी जगह न थिला से गोटे बुझीला it was full of mystery रहस्य रे परिपूर्ण गोटे जगह it had been that dreadful wet summer बुझीला उदालिया समर रे एटा होते भयंकर खरा दिन थिला कादुरे परिपूर्ण से जगह थिला बुझीला you know and places that were safe in other years अलगा दिन रे it was safe but when the rain came जेतबेले वर्षा आसुथला it was or it became full of danger बुझियला and it became a dangerous place which was full of hidden dangers बुझियला हाँ समर हाँ खरा दिन स्टोरी एटा अक्टोबर वाला ओपन रखा हितला बुझियला let me come to the story we will come to know the result what happened actually in other years gave away suddenly without warning their bodies were never recovered that was the dreadful part of it बुझियला कौन हला in other years gave away suddenly without warning they didn't come and that place was cemented से जगह जोटी को से शिकार पाई जाइतले unfortunately they came under the place and they never returned or they never came back to the house और घर को से फेरले नहीं but later on without warning or without giving a warning the place was cemented से जगह को सीमेंट कंक्रीट कर दिया गला that means they were buried alive तांको जीवंता समाधि दिया गला the story who was telling the person young lady was or the young girl who was 15 years old was speaking or telling the story to the person Mr. Newton बुझियला at first she indicated an open window which was opened in October afternoon बुझियला and she was telling the story of summer a wet summer बुझियला उदालिया खरा दिन कथा कहूची जोटा कि गरम भी नथिला कि ठंडा नथिला से भलिया कथा कहा जाय नै एठी just they went for one day shooting but they never returned ते माने वासिले नै and the story started from there and the place at where they went that was cemented later on without giving a warning बिना कोनोसी वार्निंग रे ताकू कोन करा गला कंक्रीट कर दिया गला से जगह को so it was the saddest part of the story as per the language of that young lady who was 15 years old so that was dreadful part of it बहुत भयंकर दुखदपूर्ण घटना थिला here the child's voice lost its self possessed note सेठी कोन हेतिला से झियर वॉइस टी टिके वीक हे जाइतला बुझियला टिके दुर्बलिया जणा पडुतला its self possessed note and became flatteringly human बुझियला दो पांच ही कहवा that is flattering लेखो FALTERINGLY से जगार माने तार माइंड टी अस्थिर हो जाइतला कहला बेले बुझियला इट इज अ ह्यूमन इमोशन गोटे मनुष्यर जो पारिपार्श्विक परिस्थिति को लेकर गोटे स्टोरी कहला बेले समटाइम्स वी रिएक्ट आमे रिएक्ट करू ना नहीं सिमिलरली सो पोर aunt always thinks that they will come back someday and she told to that person Mr. Newton that my poor aunt always thinks सब बेले चिंता करनी that they will come back someday दिने से माने निश्चित आसीबे they and the little brown spaniel 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 कहले लोमो थिवा कुकुर गोटे प्रजातिर कुकुर हु वाज अलोंग विथ देम तांको सहित जाइतिला से कुकुर लोमो थिवा कुकुर लोमो हला एल लोरे ओकर लो मो भगवान स्पानियल दैट वाज लस्ट विथ देम तांको सहित जाइतिया कुकुरटी भी सेठी समाधि पाई गला बुझियला सो
and walk in that window just as they used to do, and walk in that window just as they used to do ସବୁଦିନ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତି whether they will come back every day it happens ହେଲା ସବୁଦିନ ସେ ଖୋଲିକରି ରଖନ୍ତି ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ଫେରିବେ କି so that is why the window is kept open every evening till it is quick dust ବୁଝିଲା ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଓପନ୍ ରହିଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଝିଲା poor dear aunt she has often told me how they went out ବୁଝିଲା ସେଇ aunt ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଝିଆରୀକୁ ବୁଝିଲା ଯେ how her husband along with his brothers went for a day's shooting ସେ ଦିନର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବା ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ her husband with his white waterproof coat ସହିତ ଯାଉଥିଲେ over his arm ବୁଝିଲା ତାଙ୍କର ବାହୁରେ ବା ଇଏରେ and Ronnie her younger brother ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ Ronnie was along with him ତାଙ୍କ ସହିତ and singing Bertie a song ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ and name of that song is Bertie why do you want ହେଲା it is explained here how that song stand ବୁଝିଲା ସେ ଗୀତଟି କିଭଳି why do you want the meaning of that ବୁଝିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ବାନ୍ଧିକିରି ଅଛ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ବାନ୍ଧୁ ଅଛ as he always did to tease her tease ମାନେ ଚିଡ଼େଇବା TEASE as he always did to tease her ସେ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବୁଝିଲା because she said it got on her nerves ତାଙ୍କର ନର୍ଭସରେ ଏଇଟା ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ କହୁଥିଲେ and do you know sometimes on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling CREEPY creepy हठात प्रवेश करिवा भली भावना हेबा हठात प्रवेश करिवा भली भावना हेबा so as I told you the window was opened hela the window was kept opened till the end of the evening संध्या शेष पर्यंत झरकाटी खोला ही रहउतला whether they would come बुझिला से माने काले आसी जिवे की बोली करी it was the hope of the person के Mrs. Stapleton whether her husband would come along with his brothers तांकर भाई मनकर सहित आउत रिटर्न हेबा बोली करी सब विंडो की ओपन करी भाई काहे दिला भाई थिला कार तांकर हस्बैंड रो भाई do you know sometimes on still quiet evenings like this I almost get a creepy feeling मते हठात बेले बेले फील होतला कोन आसी जिवा बोली हठात से माने प्रवेश करचंती की बोली करे हठात एई मात्र रे बुझियला they will all walk in through that window feel करतले they may come through the window she broke off we can write the meaning of broke off होइची break off ru past tense होइची broke off BROKE broke off माने शांत भंग करी ले हला the past tense of break up होइची broke off she broke off with a little shudder 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 बेले कंपीवा थरिबा बुझिला so she broke off with a little shudder शांत भंग करी टिके थरिबा को लागिले it was a relief to Frampton it was a relief to Frampton when the aunt bustled BUSTLE bustle ର past tense होची bustled BUSTLE माने व्यस्त और उत्साहित तो होई जिबा आसीबा करिबा हला व्यस्त और उत्साहित तो होई जिबा आसीबा करिबा हला bustled into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance so Mrs. Stapleton entered into the place where the person Mr. Nuptial and the girl was in the conversation the lady was telling a story and she was making prank बनाउतला बुझिला through her story and the person didn't know that he was undergone a treatment से गोटे ट्रीटमेंट देख जाइछि बर्तन ए पर्यंत से गोटे ट्रीटमेंट देख जाइछि से विषय से जानि नथिला के मिस्टर नुप्टल हला
So the aunt bustled Mr. Newtel. हाँ, so it was a relief to Frampton. It was a relief. बर्तमान टिके रिलैक्सेशन रो समय आस जाइछि काहाकू फ्रम्पटन को. when the aunt bustled into the room. से जेतेबेले रूम को आसिले किए the aunt of that young girl. बुझिएला. And she was full of apologies for being late in making her appearance. आसीबाटा तांकर लेट हे गला बोलिकर से निजुक व्यस्त बनाउथले आ निजुक क्षमा प्रार्थना पई से निवेदन टाइप रो करथले. काइंड ऑफ पोस्चर इट वाज हला. एटा थला तांकर पोस्चर बिकॉज़ शी वाज टू लेट टू मीट द पेशेंट. बुझिएला. And who was that patient? Mr. Newton. And who was the doctor? Mrs. Appleton. And who was another person over there? The young lady or the young girl who was 15 years old. Bujela. So in this way the first